That might be a raised heart rate. Your heart might beat quite fast at times. You might have a bad stomach. Yes, you might have that. So it's quite normal. You might tire. If you tire, that's quite all right. You might be emotionally taken aback. It's quite that's normal. fine. You might tire to handle that. So please feel free to come up and make your appointment and talk with us. Because at Greenwich University, we are well equipped to handling student problems over the years that we've been handling students, which is 33 years of Greenwich University in the market today. So welcome to Greenwich University, and make sure we'll make you as comfortable as possible. Thank you so much. Hi, my name is Ali Afandi. I am an alumni of Greenwich, and I work for an American firm by the name of Veruzzi. Greenwich is a great place to come and study. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Chief Executive Officer of the GFS Builders and Developers, Mr. Irfan Wahed, is a renowned name in Pakistan's real estate sector. Mr. Irfan Wahed graduated in Business Administration from Greenwich University and went on to prove his mettle at the University of Washington, where he completed his MBA. He also received certificates in real estate from the prestigious London School of Economics. He has held several business management, supervision, and executive positions in the UK and USA for over 6 years. An enthusiast for sustainable foundations, he specializes in architectural design innovation and superior craftsmanship. His recent endeavors include building the Seven Wonders City in Karachi and Islamabad. GFS का विजन ये है कि हम क्वालिटी हाउसिंग प्रोवाइड करें उन लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके लिए एक क्वालिटी लिविंग एक ड्रीम है. Mr. Wahed co-chairs the Maiman Supreme Council and is actively involved with Association of Builders and Developers Pakistan. We are very proud. आज हम ये कहना मैं पसंद करूँगा कि इन लोगों का विजन जो था और इन लोगों की जो बनाई हुई चीज़ें थी वो इतनी मजबूत थी, इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने बिल्ड किया हमारे जैसे लोगों के ऊपर, हमारे जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर कि दे flourished in their careers and in their practical life. अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने से पहले आपको अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, और अच्छा इंसान होने के लिए टीम वर्क की, हार्ड वर्क की, एज वेल एज लीडरशिप स्किल, इन सारी चीज़ों में आई थिंक इरफान वाहिद हैज़ 10 out of 10. कराची पे जब कोई मुश्किल वक्त आया है, मैं समझता हूँ यहाँ पर बिल्डर्स की कमी है, लेकिन इरफान वाहिद साहब ने पाकिस्तान पे जब कोई मुश्किल घड़ी आई आगे बढ़कर पाकिस्तान के बेटे होने का सबूत दिया है, और इनकी इसी खिदमत की वजह से हम बड़े फख्र से कहते हैं कि इरफान वाहिद साहब पाकिस्तान के बेटे हैं. मैंने स्ट्रगल करता हुआ देखा है, इसके बहुत अच्छे
उसके अंदर फेथ है, बहुत मेहनती बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत है, ही इज़ ऑनेस्ट, ही हैज़ गॉट इंटीग्रिटी, ये कमिटमेंट का पक्का है, ये कभी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता है, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए वो अपना कमिटमेंट पूरा करने की कोशिश करता है. Mr. Irfan Wahid is also involved in several social initiatives, including the launch of Korangi's first community park and collaboration with Shahid Afridi Foundation. In recognition of his achievement, Greenwich University presents him with Alumni Excellence Award 2022. कुछ ऐसे थे जिनकी क्लास में जाने से आपको डर लगता था, राइट, बट ये था कि सिखाने वाले भी वो सबसे ज़्यादा होते थे. सईद साहब को पता होता था कि ये शैतान वाले बच्चे हैं, तो उनको सिक्योरिटी में डाल देते थे सईद साहब. अच्छा, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे. अब एकदम से अदनान साहब आपके लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट आ गई होगी यार, किसकी बात की जाए. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉफ़ी विद अलमनाई. और हर एपिसोड में आपकी मुलाकात डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अब क्या कुछ कर रहे हैं और उनकी रिकॉल करते हैं मेमोरीज को, जो कुछ उन्होंने ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में किया. आज भी हमें बहुत ज़बरदस्त अलमनाई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें करेंगे. तो हम वेलकम करेंगे अदनान सैयद को, हेड ऑफ ट्रांजैक्शन बैंकिंग देख रहे हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ वो कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं. अदनान साहब आपको वेलकम करेंगे, कैसे हैं आप? Thank you very much. Yeah, it's a pleasure being here. So, Mr. अदनान सैयद, ग्रीनविच की बातें तो हमने करनी है. पहले बताएं कि हु इज अदनान सैयद, प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस है, कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? यार बस इफ आप अदनान सैयद को प्रोफेशनली देखें तो आई बिन इन बैंकिंग फॉर द लास्ट 18-19 ईयर्स प्लस. कंज्यूमर बैंकिंग से शुरू किया, ब्रांच बैंकिंग, फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और फिर since the last 10 years I am into financial inclusion. Basically branches banking वाला जो एम्बिट है वो मैंने टेक ओवर किया है एंड उसको से सीखने को भी बहुत मिला है. बिकॉज आप देखें कि 2011-12 के बाद इजी पैसा और जैज़ कैश आए मार्केट में एंड एवरी बैंक वांटेड टू गो टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र. फिर उसके ऊपर स्टेट बैंक की रेगुलेशंस वगैरह, but I am very fortunate enough to have launched branchless banking in GS Bank, and then with my previous organization, First Microfinance Bank. माशाल्लाह, अब पूरा कॉर्पोरेट और बैंकिंग हमारा जो ये अहम स्टेट है उस पर आप काम करें. अच्छा, ये हुआ कैसे था, इस पर बात करेंगे बाद में. कि सबसे पहले मुझे बताएं कि टेन्योर ऑफ ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आपका क्या रहा, कौन सा ईयर था, किस प्रोग्राम में आपने एनरोल किया? यार आई जॉइंड ग्रीनविच इन मार्च ऑफ 91. रोल नंबर SB5 था. Still you remember? माशाल्लाह. SB5 235 रोल नंबर था. हमने ज्वाइन किया था खड्डा मार्केट का जो हमारा कैंपस होता था उधर. अच्छा. एंड 2 सेमेस्टर्स के बाद हम इस दरख्शां वाले कैंपस पर आए. मुझे अच्छी तरह याद है जब दरख्शां वाले कैंपस पर आए थे तो इधर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, खिड़कियां नहीं लगी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. तो हमने आई थिंक एक सेमेस्टर तो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ा और कोई फर्श नहीं था, सिर्फ मट्टी डली हुई थी. वो BBA किया माशाल्लाह से 94 जनवरी में BBA कर लिया. फिर 94 के एंड में मास्टर्स शुरू किया, 96 के अंदर मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था. सो एज आई वुड से दैट एज हमारा जो बैच था, आई थिंक वी वर वन ऑफ द फाउंडिंग स्टोन्स ऑफ ग्रीनविच. एंड SCU का प्रोग्राम था उस वक्त, ना ज़ैबिस था, ना इकरा था, ना CBM था. सो IBA के बाद कोई ऑप्शन होता था लोगों के पास तो वो ग्रीनविच होता था. अदनान साहब बताएं कि उस वक्त के MBA में और इस वक्त के MBA में क्या फ़र्क है? 94-95 में जब आपने MBA का सिलसिला शुरू किया, एक लॉन्ग जर्नी है आपकी, और इस वक्त MBA हर कोई करने को तैयार है. तो आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं, आपने कितना डिफरेंस देखा है MBA में? या देखो, MBA का डिफरेंस it basically depends on 2 major things: the institution that you do it from and the people who are imparting the knowledge to you. I feel that we in Greenwich at that time, part of Southeastern University, were very fortunate कि हमें the creme de la creme of professors मिले जिन्होंने हमें knowledge impart करी. कुछ ऐसे थे जिनकी क्लास में जाने से आपको डर लगता था, राइट,
बट ये था कि सिखाने वाले भी वो सबसे ज़्यादा होते थे, और कुछ ऐसे प्रोफेसर थे जिनकी क्लास में आपको पता है आपने जाना है, रट्टा लगाना है और आपने पास हो जाना है, काम हो गया आपका, काम हो जाता है। बिल्कुल सही है। चलें इसी पर बात करते हैं। सो विच प्रोफेसर डू यू लाइक मोस्ट, कि आपको अब तक रिमेंबर हो कि यार इन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को चेंज किया, या इनसे मैंने सीखा जो आज प्रोफेशनली मैं वो उसकी वजह से, उनकी सीखने की वजह से मैं वो डिलीवर कर रहा हूँ? आई थिंक ऑन टॉप ऑफ द माइंड एहसान दुरानी साहब मरहूम, ही इज़ वन, बिकॉज उनके मार्केटिंग कॉलेज थे, बिलाल रशीद दूसरे थे, एंड देन इफ़ आप लॉ की तरफ देखें तो अरशद तैयब अली, जिन्होंने में ठीक है सिर्फ 2 कोर्सेज पढ़ाए BBA और MBA में, बट ही ब्रॉट अस अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑन लीगैलिटीज, जो कभी कभार है आज वी इवन आस्क आवर लीगल डिपार्टमेंट्स के यार ये चीज़ हो रही है, डोंट यू थिंक इट शुड बी डन दिस वे, दो आई एम नॉट अ लॉयर, बट एक वो चीज़ थी कि नॉलेज इस तरह। दुरानी साहब का ये था कि दुरानी साहब ने रट्टा नहीं लगवाया, प्रैक्टिकली दिमाग को इस्तेमाल करना सिखाया उस बंदे ने। सही कह रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा, विच प्रोफेसर डू यू डिडंट लाइक, इनसे बस था कि यार क्लास लेनी है इनकी, कभी कभी जो है वो बस गुस्सा भी आता था, बस क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें कोई ऑप्शन क्यों नहीं है, हमने जाकर एकेडमिक्स वालों को तंग करना है, ये कोर्स का दूसरा टीचर दो हमें, ऐसा कौन सा प्रोफेसर? यार आई थिंक दैट प्रोफेसर वुड बी अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस के राहत मुनीर साहब। अच्छा, अकाउंट्स 201 से लेके अकाउंट्स 501, 502, फाइनेंस 300 से लेके MBA के फाइनेंस तक राहत साहब ने एक ही चीज़ पढ़ाई, प्लस और माइनस 15-20%, और जो एग्ज़ाम में सवाल आता था जो वो प्रैक्टिकल कराते थे, जो प्रैक्टिकल एग्जाम में होता था या तो उसका हाफ वैल्यू आती थी एग्जाम में या उसकी डबल वैल्यू आती थी। तो जब आपने सोल्यूशन एक दफ़ा सीख लिया तो ऑल यू हैव टू सी कि अच्छा ये है डबल है, अच्छा ठीक है यार, तो आपको पता है कि आंसर इसका ये डबल अच्छा, ये टैक्टिक्स स्टूडेंट्स लगाते थे, हमने सीख ली थी, वी ब्रोक द कोड, एंड राहत साहब लाइट कि जितना वजी कॉपीज होंगी वो उतना प्रेफर करेंगे। ठीक है, विच मोमेंट ऑफ जियो यू स्टिल रिमेंबर, ये आपको याद आता है कि मैंने ऐसा किया था तो उस पर ये रिएक्शन अगले का आया, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्टिल आपको रिमेंबर हो, आप हंसते हो उस पर? यार हमारी टैलेंट नाइट्स होती थी which was very nice. Everybody used to participate. And then जब हम लोग participate नहीं कर रहे होते थे तो सईद साहब को पता होता था कि ये शैतान वाले बच्चे हैं, तो उनको सिक्योरिटी में डाल देते थे सईद साहब। अच्छा, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे, खुद सिक्योरिटी। वेरी नाइस स्ट्रेटजी, वेरी नाइस। अच्छा, कभी क्लास बंक की? हाँ करी है। आप अच्छा, नॉर्मल क्या टाइमिंग्स होती थी क्लास की? इवनिंग में होती थी या वीकेंड्स पे होती थी या डे में? यार उस ज़माने में तो पहली क्लास हमारी सुबह 9 बजे भी होती थी, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू लिव अ लिटिल फार अवे, सो और फिर अगली क्लास शाम को 6 से 9 होती थी, तो 9 से 12 की क्लास करने के बाद तो आप 5-6 घंटे आप फ्री घूम रहे होते थे, राइट? एंड देन एवरीबडी न्यू एवरीबडी। तो इधर दरख्शा मार्केट के अंदर एक कैफ़े होता था MTV करके, तो वहाँ बैठ के MTV देखते थे, फ्रेंच फ्राइज खाते थे। अच्छा, उस वक्त MTV बड़ा हिट था। जी रियली, वो टाइम, उस वक्त मेरे सैटेलाइट चैनल्स भी इतने नहीं थे, मुझे याद पड़ा 90s का दौर कि MTV वो जो उधर से वो सारे शोज वगैरह जो आते थे उनका सारे म्यूजिक वीडियोस वगैरह सारे MTV पर आते थे, एंड देन वो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता था कि ये इसका ग्रुप बैठा हुआ है, उसको ग्रुप बैठा। जब MTV से जुड़ी एक बात आपके सामने रखते हैं, तो उस दौरान कोई आपको पसंद आई या आपने सोचा कि इसके साथ आगे जाना चाहिए, कोई someone is very close to your heart? अबे आज एकदम से अदनान साहब आपके लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट आ गई होगी यार, किसकी बात की जाए? 3-4 थी कॉलीग्स, फेलो स्टूडेंट्स थी, हैड अ क्रश ऑन देम एंड दैट्स अबाउट इट। मामू बन गए फिर? नाना नहीं, मामू की बात नहीं, मामू की बात नहीं, यू नो realistically spoke to them, was bold enough to go up to them, ask them out, went out, but when things are not meant to be, they're not meant to be. It's not becoming a mamu वगैरह, जो भी लिखा हुआ होता है they know best, right? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी आगे बढ़ते हैं। अदनान साहब, if you will be a part of Greenwich University again, तो क्या सोचा है? आप PhD करेंगे या कभी पढ़ाएंगे या कोई सर्टिफिकेट लेकर आकर आप कुछ आइडियाज़ देंगे, किसी ना किसी तरीके से कुछ इंगेजमेंट का सोचा है आपने कि GU को अब ऐसा इंगेजमेंट आपने पढ़ लिया, अब
कुछ होता है ना कि यार जी हुई बस एक वाबस्ता होते हो आप अपनी फीलिंग्स के, अपनी मेमोरीज को लेके, मुस्तकबिल में कुछ सोचा हुआ कुछ एंगेजमेंट्स के हवाले से? यार पढ़ाई करना तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इफ़ कभी कोई बैंक के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई पेपर वगैरह आ जाता है और चीज़ पढ़नी होती है कंप्लाइंस की या ऑडिट की, या स्टेट बैंक कोई ट्रेनिंग मैंडेटरी कर देता है, तो बड़ा अजाब सा होता है, बिकॉज अब वो माइंडसेट रहा नहीं है कि बैठ के फोकस करके इंसान पढ़ सके जो ज़माने में था। तो आई डोंट थिंक सो PhD इज़ ऑन द टेबल। Yes, I would love to come back and impart my practical knowledge, what I've gained through my little life experience to the students. Because students मुझे अभी feel होता है, because मैं काफ़ी सारे interns का junior level लोगों का interviews ले रहा होता हूँ, उनके they're not clear on what they want. जो रट्टा है वो उसी के ऊपर बेस्ड सही बात है, बिल्कुल। दे आर नॉट प्रैक्टिकल इनफ। ग्राउंड में क्या चल रहा है? आई मीन आपने CV पर लिखा हुआ है कि जी मैं गोल्फ खेलता हूँ, मैंने कहा अच्छा क्या तुम्हारा आपको, मैंने पूछा कि आपका हैंडीकैप क्या है, राइट? आपके पास उसका जवाब नहीं है, सो दैट मीन्स व्हाट यू रिटन इन योर CV इज फॉल्स। बिल्कुल ऐसा ही। अब वो कन्वेंशन दौर थोड़ी है कि CV में आपने लिख लिया। अब CV भी आप देखें सर, पढ़ने से पहले लोग उसकी ड्राफ्टिंग को, उसकी फॉर्मेशन को देख के इंस्प्रेस। अच्छा, एवरी स्टूडेंट ब्रिंग्स अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ अ CV। इंटरेस्ट एंड हॉबीज, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज। अच्छा जी, व्हाट जॉनर ऑफ मूवीज यू लाइक? एक दो मूवीज के नाम लेंगे, उसके बाद जैसे व्हाट बुक्स डू यू रीड, दे हैव नो क्लू ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। हाँ, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद उनके पास उसके जवाब होते हैं, बट वो भी रन ऑफ द मिल वाले जवाब होते हैं। तो यू नो, आई डोंट सी स्टूडेंट्स और यंग पीपल कमिंग टू द जॉब मार्केट ब्रिंगिंग इन वैल्यू। दैट इज वेयर ग्रीनिच हैज लॉस्ट आउट। चलें सर, ज़बरदस्त। अब हम बात करते हैं रैपिड फायर राउंड की। हमारा राउंड होता है, इसमें हम 1 वर्ड में जो है पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब आपको करना होगा, लेकिन वो पर्सनैलिटी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का सीनियर स्टाफ है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर कामरान के बारे में। वेरी हेल्पफुल। क्यों, मतलब कोई ऐसा मुझे रीज़न बताएं। कामरान हमेशा, आई मीन जब एक कंपैशनेट साइड थी कामरान के अंदर, ही वुड अंडरस्टैंड। आई मीन एग्जाम दे रहे हैं, कामरान 2 मिनट रुक जा यार, आखिरी लाइन लिख रहा हूँ, तो ही वुड गिव यू दैट एक्स्ट्रा मिनट और सो, राइट? अदर सम ऑफ द अदर इंडिविजुअलेटर्स विल नॉट। सर एहतशाम के बारे में आप क्या कहें? सख्त सख्त सख्त। अभी तो हमें एहतशाम साहब बिल्कुल वैसे लगते हैं, बस हमारे ज़माने में काफ़ी सख्त है हमारे साथ। जमील अहमद। जमील साहब अगेन वेरी हेल्पफुल, वेरी कंपैशनेट। ऑलराइट सर। मुनीर। Sir, I think Sir Munir, hats off to the gentleman. I've known him for the last 20 odd years plus, and उससे ज़्यादा नफीस इंसान Yes, I have not come across. You are absolutely right, sir. And the VC, मैम सीमा मुगल। हाँ, आप सीमा मुगल मैडम कहते हैं, हम सीमा आपा भी कहते हैं, बिकॉज सीमा आई थिंक इज द बैकबोन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, हैज बिन एंड विल बी, एंड शी न्यू एवरीबडीज पेरेंट्स बाई नेम। मुझे याद है जब मेरी वालदा मरहूमा आती थी कभी कभार सीमा से मिलने, तो सीमा वॉज ऑलवेज वेरी कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग विद माई मदर। बहुत अच्छी बात है ये। सईद मुगल के बारे में आप क्या कहेंगे? A very loving person, a very loving person, and again discipline की side के ऊपर straight as an arrow. So the last about the whole Greenwich University की strength क्या समझते हैं, इसकी पावर क्या है? भाई Greenwich University की सबसे बड़ी पावर जो है, I think is, if हम मेरे ज़माने की टाइम कर रहे हैं या आप अभी की बात कर रहे हैं? ओवरऑल आप जो समझते हैं, जो माशाल्लाह से जो जर्नी हम लेके चल रहे हैं आगे, तो उसके पीछे कुछ देर यार, I think Greenwich has lost out in the rat race. Greenwich की फैकल्टी आई डोंट थिंक सो अब उस पार की है जो हमारे ज़माने में होती थी. Some of the good teachers have left and अफसोस ये है कि उनको रिटेन नहीं किया गया. राइट, CBM ने काफ़ी टीचर्स हमारे तोड़े, इकरा ने तोड़े, ज़ैबस ने तोड़े. We could have made this institution second to none. I mean, ठीक है, IBA alums है अपनी जगह, but Greenwich के वो जो थोड़ा सा जो एक डाउन ट्रेंड आया, वो आया इसलिए वजह से कि अच्छे अच्छे
टीचर्स छोड़ के चले गए। एंड देन जब अच्छे टीचर्स चले गए तो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, जब अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो फिर आउटपुट भी आपका उसी लेवल का होगा। थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। एक बार फिर मेमोरीज को जो है हम बना रहे हैं, ये आप एक शील्ड दे रहे हैं, तोहफा हमारी तरफ से, ताकि हमारे प्रोग्राम में आप आए हैं, और ये आपको ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की तरफ से एक हम ये शील्ड दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये एक आपके लिए गिफ्ट बैग है। हम उम्मीद करते हैं अदनान साहब आप दोबारा वक्त निकालेंगे हमारे लिए और आपसे आके इसी तरह की मज़ेदार बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये सेशन मज़े का लगा होगा। और 94-95 की बातें हमने की हैं, उस वक्त हम तो छोटे हुआ करते थे, लेकिन हमें पता है वो जो MTV वाली बात अदनान साहब ने की है, मज़ा आ गया सुनकर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।
Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. हुसूले जाह की खातिर नकस बिज़र के लिए ये मक्तबा है मिल्लत के हर बशर के लिए। सुबह की पहली किरण की तरह ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स, जो कि इस वक्त 60 की दिहाई में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने इरादों में मुस्तहकम और मजबूत, जहन में इल्म की दुनिया लिए ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात खुश असलूबी से अंजाम देने वाले डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कादिर मुगल, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं। डॉक्टर ए.के. मुगल ने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान में तालीम की सुबह को तरजीह दी और हमतन इस तगदो में रहे कि मुल्क कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और उनकी इन्हीं खिदमात के सिले में मिलने वाला सितारा इम्तियाज एक जीता जागता सबूत है। You know, my father was primary teacher and my elder brother was also primary teacher. And basically I wanted to be engineer, but I ended up with agriculture engineering, and then I got masters in agriculture engineering from University of Sindh, and then I got a scholarship for doing masters at American University Beirut. Then I decided that I would be in education. The major reform, which was when I was chairman of University Grants Commission, a task force for higher education was constituted by the government of Pakistan, and Babar Ali and Mr. Qasim Lakha, co-chairman of that task force. I was one of the members, and we worked round the year to bring reforms in higher education, and the result was that a higher education commission was established. I believe in hard working. I believe in hard working and sincerity and honesty. I was not intelligent. I was hard working. मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और ये बहुत इनकी अपनी मेहनत है, तो he deserve it। और हाँ, इसीलिए इनकी है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। I've struggled to find words, powerful words that would accurately describe his presence in my life and his value to the educational system of Pakistan. Growing up in Pakistan, we always had to write that one essay, My Father. It was always a positive and an objective description of a person, which I doubt that an 8-year-old will ever understand. I am what I am because of my father. I am where I am because of his methodical fatherly practice and an academic leader. May Allah bless him with a long and healthy life. And thank you, Greenwich, for recognizing his accomplishments. I'm really proud of Baba for receiving the Presidential Award of Sitara Imtiaz. I think it is well deserved, for I have seen how hard he has worked towards contributing to the cause of education and his job. His life serves as a superb example for me and my siblings. Despite that, he has been a loving father to us and has always given his full and undivided attention. He has always taken interest in what goes on in our lives, be it my daily dose of stories from first grade and now ranting about grad school. He is a very down-to-earth person with not even an ounce of arrogance.
He mingles with children and adults alike, charming them with his engaging personality. I would like to start by congratulating him on this indeed a very big achievement. He has made all of us very proud. So thank you for making us proud. This is indeed a very big achievement. And I don't think so I would be able to do such an excellent mentorship of my children like you've done for us. So thanks a lot for every single thing. I mean, it means a lot to me. I also want to thank Greenwich University for arranging this function and giving respect to my family. Being the eldest son, this means a lot. I'm humbled by this gesture. I thank each one of you sitting over there. I encourage those people who are good in their subjects, in their discipline. They must come to education. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. At Greenwich University, we have made the communication channel simple through our student portal. Enter your student ID and password. Click on Desk. You should change your password before moving forward. Upload your vaccination certificate on the portal. Your portal also has details such as orientation schedule, other important information such as academic calendar, information regarding registered courses is also just a click away. Don't forget to download your semester student ID card. Do keep a check on your attendance. Click on Class Schedule to see timings and teachers of your courses. Go back to the desk to see options for blended learning. You must download your semester invoices from the portal.
track of your academic progress is easy. Check your grades through your student desk. You may also reach out to us using the desk. Send your requests, feedback, and complaints. Register online for the next semester. Information regarding SDC and societies and event invitations are present on your portal. For any queries regarding the portal, you may contact the IT department of Greenwich University. Greetings students, this is Shahir Hassan, student at Greenwich University, and today I'll be showing you guys around this university and we will be seeing some of the most important departments which you guys must be visiting now and then. So without wasting any further time, let's move in. Dear students, now we're here at the accounts department. So if you have any inquiry regarding the feature loan or the invoices, this is the place to come. And here you will meet the man behind this accounts department, Sir Muhammad Munir Khan, who is the manager coordination. Let's meet him. Welcome to all new batch Spring 2022 students. You always welcome for any assistance, any information to our department. So students, behind me, as you can see, this is one of the busiest departments at the start of the semester. Yes, this is the communication department. Here, if you want to add a major, if you want to change your major, if you want to add a course, if you want to drop a course, this is the place to go. Moreover, here you will meet Sir Rashid and his team. He will give you minimum of 3 courses and maximum of 6 courses. Let's go and meet Sir Rashid. Usually, you're not permitted to go in, but we've taken special permission to make you guys meet Sir Rashid. So let's go in. So guys, this is the communication department, and here we will meet Sir Rashid. Assalamu alaikum. My name is Rashid from Office of the Registrar. Welcome to Greenwich University. Thank you very much. So students, this is the examination department. This department makes sure that you appear for your examination, for your clearance slip. So make sure that your dues are clear and make sure that you are not absent at more than 3 days on an entire course of the semester. Here, we will meet Sir Jamil, who is Assistant Controller Examination. Let's meet him. Hello, welcome to Greenwich. So if you want to inquire regarding your CGPA or your examination results or the Dean List certificate, this is the place to come. So students, as we have covered almost every valuable detail from your accounts invoices to your examination clearance to your communication department, if you want any further detail, you should acknowledge the document present over the portal. This is me, Shahir Hassan, signing off. I hope you have an amazing journey at Greenwich University. Senator Abdul Hasib Khan characterizes a dynamic personality, a diverse business acumen, and a great regard for philanthropy. He has served as a senator for the government of Pakistan between 2009 to 2015. He is the founder and chairman of Brooks Pharma Private Limited, sharing the international market in countries like Thailand, UAE, Philippines, Bangladesh, Vietnam, Tanzania, Congo, Ethiopia, and Nigeria. He is also the chairman of Kurangi Association of Trade and Industry. Senator Abdul Hasib Khan is also the founder of Brooks Health and Education Foundation, establishing various schools and dispensaries in underprivileged areas of Karachi. He
was awarded with Sitara-e-Imtiyaz in recognition of his relentless services for uplifting Pakistan's trade and economy, as well as contributions to social welfare work. अपनी सलाहियतों को और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए सिर्फ नौकरियों के सहारे पे मत जाइएगा दुनिया में हमारी। जब हमारी दुनिया में आए तो फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए। मैं खुद भी 12 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बना था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम नथिंग। नौकरी भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, नौकरी भी करें, गवर्नमेंट की नौकरी भी करें, लेकिन अपनी सलाहियतों को अगर आजमाने का मौका मिले तो कोशिश ये करें कि एंटरप्रेन्योर बने। और एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ अल्लाह की बातें माननी पड़ती हैं। तो अगर अल्लाह की इंसानों का अगर आपने ख्याल रखा तो फिर कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। आ गई कम वक्त मारी। नी आ गई तू सैर सपाटे करके। पेट पूजा का कोई बंदोबस्त किया तूने कि नहीं किया है? क्या हो गया बाजी? एक तो मेरा पेट ਤੁਹਾਡੇ पे भारी पै गया। नी तेरा पेट तेरी तालीम भी साडे गले उत्ते पै गई है। सारी जिंदगी दर दर नचदी फिरी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜਾਂ यूनिवर्सिटियां दी फीसां भरियां। ऐ जलाला साडे किस काम दी है? अरे ना बाजी ना, तू फिक्र ना कर। कल मैंने ऑफिस बुलाया है इंटरव्यू दे वास्ते, दुआ करी। चल रब राखा। गल सुन, अभी मैंने कुछ खान वास्ते दे दे। ठीक है। Hi, I'm here for an interview. What's your name? Sara. आप सारा वहीद है? Yes. अच्छा, आप रूम नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। May I come in? Send Sarah in. Yes, I am Sara. Oh, yes, come in. Assalamu alaikum, Sarah. I'm the managing head of operations of this company, and he is my colleague. वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। So, सारा आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैंने बीकॉम किया है। I'm sorry, पर आप यहाँ क्यों आई हो? जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। Yes, but it was clearly mentioned in the job advertisement that a female accountant is required, and you are clearly a. जी आप प्लीज़ मेरी अपीयरेंस पे ना जाएं। मैं आई थिंक माय कॉमर्स बैकग्राउंड विल मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट टू दिस कंपनी। No, I don't think that you belong here. You may have the skills, but our company is not requires this type of people. जी आप ये कैसे बोल रहे हैं? I'm sorry, we are done here. आप जा सकती हैं। मुझे एक चांस तो दीजिए। नहीं, प्लीज लीव।
बाजी, ये बाजी, हाय मैं मर गई। बाजी कैसे कर लेती है, कैसे सह लेती है इन सब के ताने? नहीं दी रानी, हुआ क्या है? बाजी सारी जिंदगी बस यही सुनने को मिला है, तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आज भी यही हुआ। ये तो होना ही था। तुझे क्या लगता है मैं क्यों सारी जिंदगी घुंघरू पहन के चल रही थी? तू क्या किताबें लेके फिर रही थी? चल अब रोना बंद कर, पहन ले घुंघरू। शकीला को बोल दूंगी, सिखा देगी तुझे सब। We urge the governmental and non-governmental organizations, private corporations, and business entities to come forward and play their part in the society by providing respectable earning opportunities to the transgender community to enable them to lead a healthy and happy life. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I am the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. Hello and welcome. You're watching Greenwich Web TV and this is your host Umar Khan, and I'm here with another very special guest for today. Let me introduce to my guest and right next to me is Miss Sana Hashmi, who's a news anchor and an anchor person, a host and senior producer news at GTV, and a very charismatic personality as well. So thank you so much, ma'am, for being part of this show today. Thanks for inviting me. You're most welcome. How are you? I'm very well. आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही नीड ऑफ द आवर टॉपिक है, नीड ऑफ द मोमेंट टॉपिक है कि एक न्यूज़ एंकर की या एंकर पर्सन की, मीडिया पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह से उनको अपना काम करना चाहिए. So when we compare the Pakistan news channels to the international forum, we see a vast difference. Why do you think is that? वेल उमर, आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जब आप एक सिंपल सा मैं सारे लोगों को कहूँगी आप गूगल भी करें कि जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो आपको बताएगा, गूगल भी आपको ये कहेगा, टू गैदर द न्यूज़, टू इन्फॉर्म द पीपल, यू नो, लोगों को आप समझाएं, बताएं, आगाह रखें. और जिस ज़ाहिर है अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान में भी इसका एक तज़किरा मौजूद है. बड़ी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आपको किसी तक खबर पहुंचानी है. अब उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखें, कुरान का मैंने तज़किरा क्यों किया यहाँ पर कि वहाँ पर आयत मौजूद है कि किसी पर झूठी या सच्ची बातें लगाकर बयान न की जाएं. अब मसला ये है कि जब हम इतनी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी पर बैठे हैं, जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं आप, वहाँ अगर हम रियाकारी यानी कि आप आधा सच आधा झूठ और अपने मतलब की बात बताने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी माजरत के साथ फिर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते, फिर आप फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं. Right. और जब आप दुनिया से कम्पीट करने की पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हमारा जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है. बहुत सारे ऐसे सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम भी ले सकती हूँ, जिनके साथ हमने काम किया है, और उन्होंने हमें वो मीडिया एथिक्स शायद सिखाए जो आज की दुनिया में या आज के जर्नलिस्ट में हमें नज़र नहीं आते. तो हम इंटरनेशनल मार्केट की अगर आप कहेंगे फॉक्स न्यूज़ किस तरह खबर चलाता है सनाश में, तो शायद मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लोकल न्यूज़ नेटवर्क कैसे न्यूज़ चलाता है, तो मेरी उस पर कोई कमांड नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ शिफ्ट है बहुत ज़्यादा. हर जिस तरह की भीड़ चाल जिसको आप कहते हैं ना, मतलब
लोगों को पता नहीं है, बस खबर आई उसको पीटना शुरू कर दिया। इंटरनेशनली कोई भी इवेंट होता है उसकी एक मियाद रखी जाती है, उसको वो रिपोर्ट करते हैं, उसके साथ उसका बैशिंग नहीं शुरू कर देते कि उसको ड्रम लेके बजाना शुरू कर देते हैं। हमारा इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है, हम इंफॉर्मेशन कम देते हैं लेकिन हम शोर ज्यादा मचाते हैं। बिल्कुल। तो इंफॉर्मेशन बहुत लेस है हमारे पास, बिकॉज आई एम सॉरी, फॉर सम रीजंस हम रिसर्च नहीं करते, हम नहीं पढ़ते और हम नहीं जानना चाहते। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस जो हमें दुनिया के जर्नलिज्म से अगर हम कम्पीट करने की बात करें, जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म है, हमारा जर्नलिज्म ज्यादातर रिफ्लेक्ट करता है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ। हम उसकी कॉपी कैट्स बनने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उसमें आगे भी चले जाते हैं। लेकिन आई एम प्राउडली सेइंग कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके लेवल पे नहीं पहुंचे जर्नलिज्म के अंदर, क्योंकि वो उनका जर्नलिज्म मोर लुक्स लाइक अ exaggerated movie to me, and thank God हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे और अल्लाह ना करे कि कभी उस लेवल पे हम पहुंचे भी। बट आपने जिक्र किया शोर मचाने का, तो एक चीज जो नोटिस की एक आम आदमी ने कि सनसनी ज्यादा होती है ब्रेकिंग न्यूज की रेस के अंदर। न्यूज अक्सर होती नहीं लेकिन उसको क्रिएट किया जाता है, और जब एक चीज है नहीं और उसको क्रिएट किया जाए तो बात की जो क्रेडिबिलिटी है वो वहीं खत्म हो जाती है। देखिए, एक चीज आपने लफ्ज इस्तेमाल किया सनसनी का ना, सनसनी फैलाने के लिए खबर का होना, उसका वजूद होना ज़रूरी है जी। अब जब किसी चीज़ का आपने जैसे का वजूद ही नहीं है तो उस पर आप क्या खबर दे रहे हैं, ये कहलाते हैं गिमिक्स। और जो TRPs होती हैं वो इन्हीं गिमिक्स के थ्रू आपको डिलीवर हो रही होती हैं। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपका कैप्शन लिखा हुआ होता है कि ज़रा देखिए उसने उसका थप्पड़ क्यों मारा, पीपल नीड टू नो कि वो क्या हुआ है और वो उसको क्लिक जरूर करते हैं। सोशल मीडिया का मेरा जैसा शायद थोड़ा बहुत, या मेरे ख्याल है आप जैसा आदमी बहुत कम होगा कि उसको जाके क्लिक करे, क्योंकि हमें पता है कि अंदर कोई फजूली चीज़ होनी है, कोई काम का मटेरियल नहीं निकलेगा। बट टेलीविजन के मीडियम में क्या होता है कि यहाँ आपको TRP गेन करने के लिए ज़्यादा है, इसमें खबरियत ज़्यादा है, या इसमें हकाइक ज़्यादा है, या इसमें सोसाइटी को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, ये तीनों चीज़ें पस से पुश चली जाती है। वो जो एक एलिमेंट है थप्पड़ मारने का या चपकलिश का या एक्सीडेंट का या किसी की बैशिंग का, वो सिर्फ प्रोमिनेंट होके रह जाता है। राइट। एथिक्स का आपने जिक्र किया, जो एक ओरिजिनल जर्नलिज्म होता है और जो हम मीडिया स्टूडेंट्स पढ़ते हुए या जर्नलिज्म सीखते हुए जो आप सारे डूज एंड डोंट्स देखते हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपने क्या चीज़ नहीं करनी है। जितनी चीज़ें जो नहीं करनी होती, फॉर एग्जाम्पल शोइंग वायलेंस, शोइंग नेगेटिविटी, इग्नाइटिंग द पीपल फॉर अ सर्टन कॉज और एनीथिंग, ये सारी चीज़ें डोंट्स में आती हैं। बट पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स जब हम स्विच करते हैं तो 70 to 80% हमें चीज़ें यही दिखती हैं, आग जल रही हैं, बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एंड ऑल द नेगेटिव साइड। Why is that? अच्छा उमर, आपकी इस बात को मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि 2011 और 12 आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो आई थिंक 12-13 के बाद ये वाला जो एक एलिमेंट था सेंसेशनलिज्म जिसको आप कहते हो, या सनसनी के साथ डोंट्स पर जो एक तरीक़ेकार था, वो बहरहाल कम होना शुरू हुआ। हाँ, देखें, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट बहुत मेहनत के बाद आज आज़ाद हुआ है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल मैं इस गलती को मानती हूँ, तस्लीम करती हूँ, क्योंकि हम उस चीज़ का हिस्सा बने जब 2000 में मैंने इस जर्नी का आगाज़ किया था जर्नलिज्म की। तो उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर बम ब्लास्ट भी नज़र आते थे, क्योंकि आपको पता है 9/11 के बाद सूरत हाल दुनिया की बदल चुकी थी। उस दौरान में हमसे जर्नलिस्टिक गलतियाँ हुई हैं, हमने ब्लड भी दिखाया, हमने खुरेजी भी दिखाई, हमने लोगों को मरते हुए भी दिखाया, और हमने मरते हुए लोगों से ये पूछा भी कि आपका बंदा मर गया, आपको कैसा लग रहा है। लेकिन उसके बाद ही, एंड आई थिंक एज आई सेड दैट कि 2010 बिटवीन और मे बी द 11 हमने इस पोस्चर को चेंज किया, और जो कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया का तैयार किया गया उसमें इन सब चीज़ों को रखा गया। और जो सुप्रीम, जो हमारे, जैसे मैंने कहा, जो सीजन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो पैरोकार थे बाकी दीगर जर्नलिस्ट, उनको समझाया कि आप जब टेलीविज़न पर कोई चीज़ नशर कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, उसको लोगों तक टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उसका इथिक क्या होना चाहिए, क्या ब्लड दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए तो कैसे दिखाना चाहिए, उसका बिलर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, एक एक्यूज से क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई फैमिली का कोई किसी के लवाहिकीन है तो आप उससे क्या बात कर सकते हैं। ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया ने खुद तरतीब दिए, मीडिया के लोगों ने खुद बनाए। मैं ये बात फिर कहूंगी कि हाँ, गलती हुई है,
और अब भी शायद कहीं माइनर से जाके, जैसे एक मुझे याद आ रहा है वाकया, पिछले साल की बात होगी, मैं एक दूसरे टीवी चैनल पे थी, ईद उल अजहा का मौका था और कुर्बानी हो रही थी, तो उसमें ब्लड दिखाया जा रहा था। खैर बहरहाल ये एक प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है, जो न्यूज़ रूम का प्रोड्यूसर होता है, न्यूज़ प्रोड्यूसर के, वो देखे एक एक चीज़ को कि जो वो एयर करने जा रहा है वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ें हैं। लेकिन प्रोड्यूसर से वहाँ गलती हुई और एडिटर ने वो ब्लड जो है, जो गाय ज़िबा हो रही थी या जो नहार किया जा रहा था, ऊँट को नहर किया जा रहा था, वो पूरा ब्लड ऑन एयर चला गया। वो ऑन एयर गया ही था, मतलब सेकंड्स का, कुछ लम्हे का मेरा ख्याल है टाइमिंग आया होगा कि मैं खुद बैक पर थी न्यूज़ फ्लोर पर, मैंने दौड़ कर वहाँ पर से चिल्ला के, आपको पता है न्यूज़ रूम का एक अलग माहौल होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा लाउड होके कहा कि ये हम क्या दिखा रहे हैं। तो हमने उसको उसी वक्त रोका और फिर ज़ाहिर सरजनिश भी हुई, उन लोगों को हमसे पूछा भी गया कि ये गलती कैसे सरजद हो गई, क्योंकि हम एक मीडिया चैनल के लोग हैं, हमसे हम इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोज़ाना की बेसिस पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो यस, मीडिया एथिक्स ये है कि आप लोगों से, मरते हुए आदमी से ना पूछें जाकर कि आपको कैसा लग रहा है आप मर रहे हैं, या उसका बंदा किसी के घर में कोई मतलब चोरी डकैती कुछ भी हो गया और आप पूछें उससे कि आप उस वक्त कहाँ थे, वो कहेगा अगर मैं होता यहाँ तो मैं ये सब तो ना होता ना, मतलब आई मीन समटाइम्स हम बहुत ही फुलिश किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। कॉमन सेंस होना जरूरी है इसमें। एक और चीज पे अगर हम आए, देखें आपने सीजन जर्नलिस्ट का जिक्र किया, तो हमारे पास बहुत अच्छे सीजन जर्नलिस्ट हैं who are on the top level, but when we talk about the reporters and everyone who's on the field और जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने सीजन जर्नलिस्ट उनका शायद पूरे दिन में आधे घंटे 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, बट जो ज्यादातर मटेरियल आ रहा होता है ऑन दैट इज रिपोर्टर्स who are creating stories around the city and around the country। तो एक कोई बेंचमार्क होना चाहिए, कोई खास एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट आई हैव नोटिस, मैं किसी को यहाँ डिमीन नहीं करना चाह रहा या पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, बट व्हाट आई हैव नोटिस कि लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा छलकती है। मैं किसी की अंग्रेज़ी का मजाक यहाँ नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन जब आप फॉरेनर से बात कर रहे हैं या आप अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका नेशनल जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर ये चीज़ पोर्ट्रे हो रही है कि ये पाकिस्तान का रिपोर्टर है और ये न्यूज़ चैनल का वो रिपोर्टर है जिसकी ये ज़बान है, जो क्लियरली बात भी नहीं कर सकता। तो जो आपका इमेज इंटरनेशनली जा रहा है वो हर तरह से, चैनल का भी, मुल्क का भी और उस रिपोर्टर का भी, वो बहुत डिस्टॉर्टेड जाता है। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो आपने किए। एक तो आपने कहा कि रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ गई ना। देखिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि हमारे यहाँ वर्कशॉप्स बहुत होती हैं, रिपोर्टर्स की भी होती हैं, प्रोड्यूसर्स की भी होती हैं और शायद मेरा ख्याल एंकर्स की भी होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो नहीं होती है। ये एक डिलेमा है और ये डिलेमा मुझे लगता है इसलिए भी है कि मेरे बाद की जो जनरेशन अब मैं देख रही हूँ, अपने बात की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वो हमारे सामने जिस तरह से काम कर रहे होते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत कम कैपेसिटी रखती है सीखने की। उसको समझाया भी जाए तो शायद वो उस तरबियत से नहीं समझना चाह रहे होते हैं। अब दूसरा सवाल जो आपने कहा, एक तो देखिए ट्रेनिंग का फुकदान है। मीडिया टीवी चैनल्स के लोगों को मैं यहाँ से ग्रीनिच के इस स्टूडियो से इस बात का ज़रूर पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने लोगों की ट्रेनिंग्स करवाएं। आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को दुनिया भर से, यहाँ पे मैं बड़े बड़े इदारों के नाम आपको लेके बता सकती हूँ, मतलब लोग आए थे यहाँ, हमने ट्रेनिंग्स हासिल की, हमने रॉयटर्स से हासिल की, हमें बताया गया कि हाउ टू एडिट, हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोग्राम्स, हाउ टू एडिट द न्यूज़ एंड हाउ टू एडिट द प्रोग्राम, न्यूज़ की लिखने का तरीका क्या है, कैप्शन कैसे बनेगा। आई मीन बहुत ही निटिग्रिटीज में जाके हमारी ट्रेनिंग हुई है। लेकिन अब मैं वो बार बार बात दोहरा रही हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी है हमारे रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग की। वो लगता है कि माइक पकड़ के बस बोले जाना है, क्या बोलना है, किस स्पेस में बोलना है। देखिए, गुफ्तगू करते हुए 2 मयार होते हैं। जब आप किसी से बात करें तो आपकी बात मुकम्मल तौर पर उसको समझ आनी चाहिए और आपका लहजा इतना शफाफ होना चाहिए कि अगर वो आपके जुमले गिनना चाहे तो वो गिन ले कि आपने 1 मिनट में 70 अल्फाज बोले हैं कि 100 अल्फाज बोले या लफ्ज बोले। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। फिर जब आप बात करते हो अंग्रेजी की या उर्दू की या जिस भी आप जुबान में बात करते हैं, देखिए अंग्रेजी का तो मामला ये है उमर साहब के ये हमारी कोई मदर टंग तो है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें फ्लुएंट होना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कोई तीसमार खान हैं तो फिर उसके लिए भाई पढ़ लिख के आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे, जो काम आपको आता नहीं वो काम ना कीजिए। जिस लहजे या जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड ही नहीं है तो
तो आप अगर उस पर ना भी बात करें तो कोई उसमें मजायका नहीं है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल इमेज की बात करते हो तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। देखिए, नेशनल मीडिया पे जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई मैस कॉम करके आया हुआ होगा, इल्ला माशाल्लाह होगा। तो अगर इल्ला माशाल्लाह लोग मैस कॉम करके आए हुए हैं तो वो कैसे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरह डिलीवर करेंगे? मैंने इनिशियली बात ये की थी कि एक एंट्रेंस पे बेंचमार्क बने, कोई रिक्वायरमेंट्स हो, क्योंकि एक जो इमेज बना हुआ था वो ये कि जी आप कहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते तो मीडिया में आ जाओ। देखो, एक ये भी उमर, मैं बड़ी अक्सर आप जैसे स्टूडेंट्स और दीगर लोगों से जब हमारी मुलाकात होती है, हम लेक्चर्स को जाते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि ये भी एक तरह का ट्रेंड है कि आप क्या करते हैं जी, मैं मीडिया में काम करता हूँ, क्या करते हैं जी मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्या करते हैं जी मैं एंकर हूँ, क्या करते हैं जी मैं रिपोर्टर हूँ। एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ना ड्रम्स बन गए थे, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। मैं हर दूसरे लड़के लड़की से पूछती थी, वो कहते थे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो प्लीज बी क्लियर इन योर फ्यूचर व्हाट यू वांट टू डू इट, व्हाट यू वांट बी, मतलब आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स की नहीं लेकिन और दीगर लोगों की बात करी, मैं बेतहाशा ऑडिशन ले चुकी हूँ, मुझे अंदाजा है, मैं बच्चों को देखती हूँ, वो बिल्कुल उनको अंदाजा ही नहीं है कि उनका फोकस क्या है, क्लैरिटी नहीं है, डीफोकस्ड हैं कि उनको आप कहीं पे भी लगा दें। मतलब मैं जब उनको फॉर्म फिलिंग के लिए देती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो जो स्पेस होती है वो खाली होती है और वो सोचते हैं कि शायद वो मुझे भर देनी चाहिए कि मैं उनको बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए। देखो, मैसकॉम पढ़ें, जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही थी मैं उसको बिल्कुल नहीं मानती कि चैनल्स का कोई फ्यूचर नहीं है और लोग डिजिटल मीडिया की तरफ जाए। डिजिटल मीडिया की अपनी अहमियत है और नेशनल टेलीविजन की अपनी अहमियत है, लेकिन देखो, जब आप पढ़ रहे हो आपको ये नहीं पता कि इस 4x4 के कमरे में 2 लाइट्स की कैपेसिटी है या 4 लाइट की कैपेसिटी है, बाउंस ऑफ लाइट क्या है, विदाउट बटर पेपर बाउंस करेगा या नहीं करेगा, या इसके ऊपर जेल लगाना पड़ेगा। तो प्लीज यार, फॉर गॉड से आप फिर उस चीज को जब तक नहीं समझोगे आप डिलीवर नहीं कर सकते। मैसकॉम के बच्चे जो पढ़कर आ रहे हैं, या तो वो आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने मैसकॉम नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं बड़े क्लियरली आपको बता रही हूँ कि मैं मैसकॉम स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होकर सीखा है। मुझे पता है कि ट्राइपॉड को कितना मुझे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, एंगलिंग कैमरे की क्या करनी है, इंचेस ऑफ फ्रेम्स भी हमें सिखाए गए। जो मैसकॉम का स्टूडेंट आता है वो बाय बुक जाता है। देखो, जब आप फ्लोर पे यहाँ खड़े में हैं और हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट ये आपने मुझे बना के दिया है, हो सकता है कोई और प्रोड्यूसर आए सीनियर और वो हमें इससे अच्छा फ्रेम बना के दे दे, राइट, तो वो कैसे बनाएगा। देखो, मैं और आप बाय बुक जाएं अगर, तो हम कहेंगे कि नहीं, इस रूम की डायमेंशन के हिसाब से मुझे लाइट इतनी बाउंसी मिल रही है, मेरा फ्रेम सेटल्ड है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, तो मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। लेकिन कोई और सीनियर आदमी आके हो सकता है हमसे बेहतर बात करे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होगा। बट आई एम ट्राइंग के बाय बुक जरूर जाएं, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस काउंट्स। राइट। अब एक बात आपने की कि क्लैरिटी नहीं आती है बच्चों को, तो अब का जो हमारी यूथ है, एक मेरा भी बहुत एक सोच है इसके ऊपर और मैं काफ़ी कंसर्न हूँ इस बारे में भी कि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उनकी इंटेलेक्ट का पता चलता है। एक बच्चे की इंटेलेक्ट बनती है उसकी सराउंडिंग से, जो वो देखता है, जो वो सुनता है। तो ग्रोइंग अप एक बच्चा अपने बचपन से, अपनी टीनेज से जो अपने टीवी पे देखता है, उसका उसकी इंटेलेक्ट में एक बड़ा अहम किरदार है। एंड नाउ ग्रोइंग अप जो न्यूज़ चैनल पे एक बच्चा, अगर कभी ज़िंदगी के अंदर मेरे फ्यूचर हो तो मैं किसी भी बच्चे का अपने न्यूज़ चैनल सबसे पहले बैन करूँगा कि आपको इजाज़त ही नहीं देखने की। कितना किरदार है हमारे न्यूज़ चैनल का हमारी इंटेलेक्ट को आज ये बनाने में। और आप न्यूज़ चैनल की बात ना करें, खाली ओवरऑल मीडिया, इसलिए आपको लेके जा रही हूँ उस तरफ। आजकल एक ड्रामा बहुत हिट चल रहा है पाकिस्तान में, हर तीसरे बंदे को उस ड्रामे का पूरा गाना भी आता है, उसका जिंगल भी आता है, उसके कैरेक्टर्स के नाम भी पता है, नाम भी ले लेती हूँ ड्रामे का, सिर्फ तुम के नाम से है, पता नहीं क्या, मुझे तो पता भी नहीं है, शायद मैं कुछ इसी तरह का नाम है, आई थिंक। देखो, सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है वो ड्रामा रिफ्लेक्ट करता है, वही न्यूज़ रिफ्लेक्ट करती है। देखो, रेप हो रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, अब्यूज हो रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, मिसकमिटमेंट्स हो रहे हैं सोसाइटी में तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, आप लोगों को मिसबिहेव कर रहे हैं तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ।
अगर सोसाइटी इतनी सेटल्ड हो जाए कि वहाँ इतने इम्बैलेंस किस्म के इमोशंस ना मिले मुझे, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा दिखाने के लिए। मैं आपको यहाँ मिसाल देना चाहूँगी, BBC आप सब लोग देखते होंगे और हम भी देखते हैं। एक सर्टेन टाइम पर BBC के ऊपर डॉक्यूमेंट्री चलती है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? उनकी FPC में क्या खबरें दिखाने के लिए नहीं होती? क्या उनके लैंड पर इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही होती हैं कि वो ना दिखाएं? बट यू नो, उनका एक नेचर है, उनको एक चीज़ में सेटल्ड कर दिया गया सोसाइटी को कि फॉर दैट सर्टेन पीरियड आप दिखाएंगे और इसके बाद आपने मूड को स्विंग कर देना। हमारे यहाँ बिकता यही है हमारे। That's the irony. That's the irony because देखो, आपका देखने वाला आपको नहीं देखेगा। आप अगर 4 किताबें लेके बैठे ना कि आज हम बात करते हैं कि अशफाक अहमद साहब ने क्या लिखा था, या ना चले आज ऐसा करते हैं। Why is that? Because we fed them that. अगर आप अच्छा काम करेंगे और अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे। मेरा कहने का मकसद है, नॉट ओनली न्यूज़, जितना मीडिया है, जो आपने बीच में डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, और अगर हमारी सोसाइटी में रेप हो रहा है, चोरी हो रही है, क्राइम हो रहा है, तो एजुकेट करने का भी तरीका है। होता क्या है कि व्हेन वी ट्राई टू मेक समथिंग टू एजुकेट देम, पीपल गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम दैट एंड कम टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ इट। एब्सोल्युटली राइट एंड आई एग्री। लेकिन मैं तारिक अजीज साहब को सभी सारी दुनिया जानती है। तारिक अजीज साहब से एक दफ़ा मेरी टेलीफोन पर बात हुई। मैं उनको अपने एक टेलीविज़न शो के लिए मदऊ करना चाह रही थी कराची, लेकिन वो नहीं आ सके बहरहाल। तो उनसे मैंने पूछा कि सर, बड़ी एक सवाल का तो मुझे जवाब देते, तारिक अजीज कैसे बन गया, मतलब आज तो कोई सोच ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने वो काम किया जो कोई नहीं कर रहा था। उस तरह का शोज उस जमाने में जो शोज हो रहे थे, वो आपको भी पता है, स्टूडियो 2:45 हो रहा था, स्टूडियो 2:30 हो रहा था, मोइन अख्तर शो हो रहा था, यस सर नो सर हो रहा था, और बहुत सारे दीगर शोज हो रहे थे। गिफ्ट देना, लोगों से सवाल करके उनको अप्रिशिएट करने का काम तारिक अजीज साहब ने शुरू किया। उन्होंने कहा ये मैंने लोगों को सिखाने की मेरी एक या पहले पाकिस्तान टेलीविजन का एक विजन था कि हम लोगों को एजुकेट भी करें और उनको प्रेज भी करें साथ साथ। अब क्या हो रहा है, उसका बिल्कुल अलग हो रहा है। आप लोगों को सिर्फ आई एम सॉरी फकीर बना रहे हैं या भिखारी बना रहे हैं। True. ये ले लो मोटर बाइक, ये ले लो कपड़े, ये ले लो और गाना, उसके लिए करवा और ये क्या रहे हैं, एजुकेट करने की जगह डांस करवा रहे हैं, ये चीज उनका मजाक बनवा रहे हैं। इसी एलिमेंट पे एक केक रखा है, आप कह रहे हैं इस केक को आप मुंह से खाएं, और वो पूरा केक खाते हुए बंदी की शक्ल बिगड़ गई या खातून की शक्ल बिगड़ गई। देखो, मैं आपसे फिर उसी बात पे आऊंगी, व्हाट सोसाइटी नीड्स। ये बात मुझे तारिक साहब ने कही, नहीं सोसाइटी अभी जो मैंने अपनी पिछली बात की है उस बात की नफी करेगी, क्योंकि वो एक सीनियर आदमी, उन्होंने बिल्कुल मुझे सही सीख दी कि जो दिखाओगे ना वही लोग सीखेंगे। अगर हम पॉजिटिव चीजें दिखाना आज से कोई एक चैनल शुरू कर दे, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे कार्टून नेटवर्क्स देखते हैं तो वो भी हिंदी देख रहे होते हैं डबिंग्स में। हाँ, हमारे पास हमारे बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है। हम अपने बच्चों को ना गेम्स दिखाते हैं, ना इंडोर गेम्स के बारे में बताते हैं, ना आउटडोर्स। हम बच्चों के लिए कोई कंटेंट जनरेट ही नहीं कर रहे। जिस जमाने में मैं बच्ची थी, हमारे पास बड़ा कंटेंट होता था भाई, हम देखते थे, चाहे आप ऐनक वाले जिनका मजाक उड़ाते रहे बैठे हुए आज के दौर में, लेकिन हम उसको देखकर बड़े हुए। कैम कैंडी कार्टून आता था, हमारे लिए 5 बजे का वो टाइम बड़ा प्राइम टाइम होता था। हम कहते थे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कैम कैंडी जरूर देखना है हमने। तो निंजा टर्टल्स एंड सो ऑन एंड ऑन, हम देखते थे। तो आपने बच्चों को रिमूव कर दिया, आपने सिर्फ वायलेंस को दिखाना शुरू किया। तो मीडिया ने अपना शिफ्ट जब चेंज किया कंटेंट का, तो सोसाइटी ने भी उससे वही डिमांड करना शुरू कर दी कि ओके वी नीड मोर, वी नीड। मैं यहाँ पे जो जितने किड्स कंटेंट है उसकी एट द सेम टाइम तारीफ करना चाहूँगा। वी हैव लेजेंड ऑफ मार्कोर, 3 बहादुर ग्लोबली अवार्ड्स जीते हैं। वी हैव द बुरका एवेंजर्स, एक नई चीज़ ब्रांड्स ने शुरू की है कि वो अब अपने ब्रांड को बच्चों को टारगेट करके कमांडर सेफ गार्ड हो जाते हैं, और डर 2 आ जाता है जर्म से फाइट करने के लिए, और 10 चीज़ें आ गई हैं। तो एट द सेम टाइम वो चीज़ें भी चल रही हैं। बट ये जो आपने कहा ना कोई एक चैनल, यहाँ एक चैनल से आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, क्योंकि एक चैनल जब अच्छा काम करेगा और बाकी वही कर रहे हैं तो उस एक को साइडलाइन कर दिया जाएगा और बाकी पाकिस्तान टेलीविजन लोग कितना देखते हैं। दैट्स द पॉइंट, क्योंकि अगर आप पीटीवी देखते हैं तो आपको दिखता है कि पाकिस्तान में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। और यही एक मेरी बात पहले हमारी बात में रह गई कि एक सीन चल रहा है किसी जगह पे XYZ जगह पे, और मैं चैनल स्विच करना शुरू करता हूँ फ्रॉम 1
220 मैंने 20 डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स स्विच किए और एक ही सिनेरियो दिख रहा है और उसके मुझे 20 अलग एंगल्स दिखे. नाउ बीइंग अ कॉमन मैन आई एम वंडरिंग कि इसमें से हकीकत क्या है, क्योंकि 20 के 20 लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. किसी जो एक चैनल किसी को हीरो दिखा रहा है, एक उसी को विलन दिखा रहा है, एक उसी को सपोर्ट कर रहा है और एक कह रहा है कि नहीं इनकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है. व्हाट टू बिलीव? इस पे भी मैं आपको एक वाकया बता देती हूँ. हम बैठे हुए थे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा था कि हम कहते थे कि हुकूमत भी हम बनाते हैं, हुकूमत भी हम गिराते हैं. ये जर्नलिस्ट की अप्रोच थी. और वहाँ पर जो जर्नलिस्ट बैठे थे वो बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट थे. ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे लोग थे. कहने का मकसद क्या है इस बात के पीछे, कि जब जर्नलिस्ट को अपनी पावर का अंदाज़ा है कि वो जो दिखाएगा लोग उसको अब्जॉर्ब कर जाएंगे. अब क्या हुआ ये है पिछले 20 वर्षों के दौरान कि सोसाइटी डिवाइड हो गई. तो ये तो हमने सारी बातें कर ली और सारे प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशंस और वो सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम अपनी आवाम को, उनकी मेंटालिटी को, जितने लोग सब गलत काम कर रहे हैं उनको सुधार सकें, बट कहीं से तो स्टार्ट हो सकता है, कहीं से तो वी कैन मूव एन इंच टूवर्ड्स बेटरमेंट. एग्रीड ऑन दैट उमर. कि देखें कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है. ठीक है, हमारे तो दरिया भी सूख गए. मसला ये है कि किसी एक को जैसे आपने कहा कि फ़र्क पैदा करना पड़ेगा या पहला स्टेप उठाना पड़ेगा. उसके लिए चाहे एंटरटेनमेंट साइड हो, चाहे न्यूज़ साइड हो, या फिर दीगर और जो जॉनराज हैं उसमें काम करने वाले लोग हों, टेलीविज़न के अलावा रेडियो का मीडियम हो, अखबार हो, या फिर डिजिटल मीडिया हो आपका. कहीं बेहतरी की शुरुआत करनी पड़ेगी. जितनी नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं हम, अगर हम थोड़ा सा इसमें एजुकेशनल एलिमेंट ऐड कर दें तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बिल्कुल ख़त्म या आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ज़ायल होना शुरू हो जाएगा. लेकिन उसमें जो बुनियादी चीज़ है उसमें ज़रूरत है आपको पढ़े लिखे जहनों की, विजनरी लोगों की, जिनके पास जहन हो. उनको सिर्फ ये अहमियत ना हो कि मेरे कितने व्यूज़ आ गए, मेरी कितनी TRP आ गई, या मैं कितना लोगों में मकबूल हूँ. उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो बात बता रहे हैं या कह रहे हैं या दिखा रहे हैं टेलीविज़न पर या किसी भी मीडियम पर, उसकी अहमियत क्या है और उससे उनकी सोसाइटी की पॉजिटिविटी पे कितना बेहतर असर पड़ेगा. आई थिंक अगर कोई एक या दो भी ये शुरुआत कर देंगे तो बाकी भी सब फिर उसी लाइन पे चल पड़ेंगे मेरा ख्याल. राइट, वेरी वेल सेड. और इस बात को अगर मैं समराइज करूं तो आई वुड से कि जी सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल करें कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका ज़िंदगी में पर्पस क्या है. इंसान में उसकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हैं तो यू कैन नॉट गिव ऑनेस्टी और गिव एनीथिंग बैक टू द वर्ल्ड. तो चाहे आपका पर्सनल सक्सेस हो, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ हमने स्टार्ट की थी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि आपने लोगों तक जब कोई कहानी पहुँचानी है तो आपको इस बात की श्योरिटी हासिल करनी है कि वो बात आपकी 100% करेक्ट हो, ऑथेंटिक हो, ताकि क्योंकि जब आप टीवी पे आके कोई एक बात करते हैं तो लोग बगैर उसकी तस्दीक किए दुनिया में जाके वो बात फैलाते हैं, और इस चीज़ की एडवांटेज लोग लेते हैं जो गलत काम कर रहे हैं कि आप कुछ भी बात फैलाएं और वो यूँ सोसाइटी में फैल जाती है. तो एजुकेट करना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है. एजुकेट करने के साथ साथ सही बात बताना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है. वी एट ग्रेनिच यूनिवर्सिटी वी डू हैव आवर मीडिया डिपार्टमेंट, जहाँ मीडिया स्टडीज़ के अंदर यही कोशिश करते हैं कि जब हमारा बच्चा फील्ड में जाए तो वो एथिक्स, इंटेग्रिटी और किस तरह से काम होता है वो सीखे और इस मीन वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर सके, जहाँ पे अच्छा काम करने पे हमेशा आपको रेजिस्टेंस मिलेगी. तो इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अगली दफ़ा मुलाकात हो तो हमारे ये जो मसाइल हैं जो हम फेस करते हैं मीडिया के अंदर नेगेटिविटी की तरफ, वो बेहतर हो. थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आवर टाइम, एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया. बहुत यू मोस्ट वेलकम. सो बिल्कुल आपने सुना सना हाशमी को, द सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर एट GTV, ऑल्सो अ न्यूज़ एंकर, a host and a very charismatic personality, as you just heard. So until next time, Pakistan Zindabad.
Dr. Sirajuddin Aziz is an experienced banker having served in Pakistan, United Kingdom, China, Hong Kong, United Arab Emirates, and Nigeria, covering a wide spectrum of portfolios. Despite a prolific banking career spanning over 3 decades, he also is a true teacher at heart. His scholarly contributions span across various domains, including human behavior, economics, ethics, leadership, management, politics, and religion. Mr. Aziz is a regular contributor to national and international dailies, journals, and magazines. He has published several works of scholastic distinction, including The Art and Craft of Management, Corporate Pakistan, Insights to Leadership and Governance, In Quest of Mirage, The Essence of Islam, and Mongolian Pot, among others. He has also featured in televised discussions on finance and economy and is an audible speaker across various fora on a wide array of subjects. In 2015, Greenwich University conferred upon him the honoris causa degree in recognition of his multidimensional services. आज सबसे पहले मैं मुखातिब होना चाहूँगा उन वालिदैन को जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि आज का दिन आपके लिए बाइस मसरत होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों ने एक इल्म हासिल किया है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से, जो मुझे पूरा यकीन है वो बरूए कार लेकर आएंगे अपनी आगे ज़िंदगी में और कुछ ऐसा काम करेंगे इस कौम मुल्क के लिए कि आपका भी सर बुलंद रहेगा हमेशा फ़ख्र के साथ। तालिब इल्मों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप आइंदा जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों तो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपने माशरे के लिए काम कीजिए, अपने मुल्क के लिए काम कीजिए और ऐसा कोई काम कीजिए जिससे हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके वालिदैन का सर झुके नहीं बल्कि फ़ख्र से ऊँचा रहे। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनिच वेब टीवी को, ग्रीनिच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनिच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनिच वेब टीवी को, ग्रीनिच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनिच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस। Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers
the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Mr. Sirajuddin Aziz is an institution within himself. He's regarded as one of the leading bankers of this day and age, not only on a national level but internationally as well. His contributions to the executive financial sectors of banking like marketing, foreign trade, corporate credit and trading and development, to name a few, are groundbreaking. Mr. Aziz started his career in 1977 at the Bank of Credit and Commerce International. After making his mark, he moved to different professional assignments, which took him to numerous countries, such as Nigeria, Abu Dhabi and England, where he rendered his exemplary services. Mr. Siraj is currently heading the Habib Metropolitan Bank as President and CEO. Under his unparalleled leadership, the bank has seen immense growth, with the network growing impressively in all parts of Pakistan. He is also one of the founding members of UBL and served as CEO of Bank Alfala, where he led the bank to sustained growth. With 406 branches in 5 countries and an HR complement of over 10,000 employees. He has vigorously promoted Pakistan as a trading partner and attracted large investments in his capacity as bank head. He has proceeded on to actively overseeing the entire spectrum of banking operations of various banks for over the last 15 years. So you've held top positions in the banking sector. What was the one thing that made you choose this sector and why do you keep going on in it? To be honest, I did not select banking as a profession. I went there accidentally, in the sense that everybody from my class while we were at the university were applying for a classified ad response in the Daily Dawn. And from one interview to the other, it was a journey, and suddenly I decided to plunge into banking. The fact that I have clung to it is the fact that I realized over the period of time that I spent there that banking is not about money, banking is not about economics, banking is about people, and people interest me. So in your book, Bitter and Sweet, you've wrote that you gave meaning to your father's life. How was that? The book that you're mentioning is actually an autobiography of my father. I have only put in an afterword and I've called it my book. It's essentially largely written by him. The fact that my child gives a meaning to my life today is the same fact that I narrated that I gave meaning to my parents. And that meaning became more pronounced and more important in his life because I lost my mother at a very young age. So I was his motivating factor to go on with life. That's why I mentioned to him that I gave meaning to his life. And other than that, you have been an inspiration to all of us. That's very kind of you. Is there anything you would like to give as a message to our graduating students? Please, I would implore upon each and every single graduate today that please look at the faces of your parents. They're smiling, they're happy. Don't pull out that smile ever from their face. Let it remain there, radiating and smiling and giving you strength for your life. Thank you so much for giving us your time, sir. Thank you. Pleasure is mine. Aziz, an inspirational personality and a noted visionary of our time, is not only binded to the banking and financial sectors, but is also a teacher at heart. He yearns to see the youth of today taking our country to greater heights. He has penned a number of poems and writings on different topics and is also an avid reader. Mr. Siraj's career is one which has seen growth at an exponential level. He has been the recipient of numerous awards, all highlighting the milestones that he has acquired over the time of his illustrious career. He is a man of many talents and is duly credited for it.
Despite being a distinguished banker and having a strenuous schedule, Mr. Aziz is still a dedicated family person. He has always been and remains a man of virtue. When I got married, we went abroad, we went to Nigeria. His first posting was when I got married. Before that, he has been staying at London, Abu Dhabi. But at Lagos, we had a very good time there. He's a very good husband. और यानी कि we take advantage of it also because he's good. और बस एक शिकायत है because टाइम ज़्यादा नहीं देते ये घर पे और he comes around about 9:30 at times. ज़ाहिर है we hardly because he's very fond of his children. So even though they don't get the time they need or he's not fond of going out, having food out, just wants to be at home with his children. तो जो कुछ भी है हम लोग छोटी सी फैमिली है. Good. He is humble, disciplined, and extraordinarily giving. He inspires those he meets with his undiluted humbleness, sincerity, and compassion. He delivers every word he speaks with a dignified thoughtfulness and humble sweetness that leaves his audience overswept with a sense of calm and an urge to listen to more. For his significant contributions to the development of his beloved country's financial sector and for his honorable public service, the degree of Doctor of Financial Management, honoris causa, is being awarded to Mr. Sirajuddin Aziz at the Convocation 2015 of Greenwich University, Pakistan. जब मेहनत, हिम्मत, जहानत, लियाकत और खिदमत इंसानियत की सिफात इंसानी वजूद में ढल जाएं, तो सरदार मोहम्मद यासीन मलिक का खाका सामने आता है। सरदार यासीन मलिक एक अहद साज और हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। फ़रोग़ तालीम के लिए अनथक मेहनत, मुस्तहक़ीन की मुसलसल खिदमत और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खिदमत बा तर्ज इबादत आपकी जिंदगी का नस्बुल ऐन है। सरदार यासीन मलिक 1941 में बर्रे सगीर में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद 9 साल की उम्र में पाकिस्तान तशरीफ ले आए। इल्म की शमा से मुआशरे को मुनव्वर करने वाली शख्सियत यासीन मलिक ने अपनी इब्तिदाई तालीम लियारी से हासिल की और बाद अज़ां हुसूल इल्म की गरज से सिंध मदरसतुल इस्लाम और सेंट पैट्रिक कॉलेज से मुंसलिक हुए। यासीन साहब की इब्तिदाई जिंदगी उसरत से इबारत है। वो बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब सड़क किनारे आवीज़ा बरक़ी कुमकुमों तले मुताला किया करते और इसी इल्म, दोस्ती, अज़्म हिम्मत, मेहनत और लगन और जहद मुसलसल की बदौलत आप कठिन लम्हात और मुश्किल औकात को शिकस्त देकर कामयाबी और कामरानी से सरफराज हुए। सरदार यासीन मलिक जहां मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दुखी इंसानियत की खिदमत और बेसहारा लोगों की मुआवनत के साथ साथ फलाही और रिफाई इदारों से भरपूर ताउन करना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बतौर नायब सदर अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान, आपने कुदरती आफात से मुतासिरा अफराद की बहाली के लिए जो इक़दामात किए वो यकीनन काबिले सताइश है। सरदार यासीन मलिक ने उबूरी हुकूमत में न सिर्फ सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर खिदमात अंजाम दी,
बल्कि अपनी लियाकत और वक़ी तजुर्बे की बदौलत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर हुए। बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल सरदार साहब की खिदमात को किसी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता। दर्स व तदरीस की फरोग और तरवीज और तलबा को जदीद उलूम व फनून से आरास्ता करने के लिए यासीन साहब ने सैकड़ों तालीमी इदारों की माली मुआविनत फरमाई और आज भी मुताद्दिद स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की सरपरस्ती के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यासीन साहब को इनकी गिरा कद्र समाजी खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज अता किए गए। अवामुन्नास फलाह व बहबूद के एतराफ में इन्हें साल 2004 में मुल्क का बेहतरीन आदमी करार दिया गया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Now, these are qualities that are, mashallah, needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessing of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. And I'm glad that you recognized his services to society and awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu सर, आपका ताल्लुक सरदार यासीन मलिक से बहुत पुराना और गहरा रहा है। क्या आप उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब आपने सरदार यासीन मलिक के बारे में पूछा तो यकीन कीजिए नाम सुनते ही फरिश्ता खतलत इंसान की याद आ जाती है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कभी कि नूरजहां ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मीयत हमी हस्त तो मैं ये कहूँगा कि अगर ज़मीन पर कोई फरिश्ता मौजूद है तो वो सरदार यासीन मलिक हैं। उनको आप देखिए, चलते फिरते फरिश्ता हैं, नहायत खुश मिजाज, नहायत नरम गो, नहायत अन्य या उनके रहन सहन में ये वो चीज़ें हैं कि जो उनको सबसे नुमायाँ करती हैं। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ बहुत कुछ है। तन्हा काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसमें अपने कारोबार के लिए, अपने कैरियर के लिए कोशिश करें कि दयानतदार लोग आए। तो हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक शेख हमारे क्लास में पढ़ते थे, उनका केमिकल का काम था, जहाँ से मेरे कैरियर शुरू हुआ कारोबार का। मैं वहाँ पर एज ए सेल्समैन काम करता था कॉलेज के टाइम के बाद में। तो 1% कमीशन मिलती थी मुझे, और मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए मोहम्मद सिद्दीक शेख को। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और अल्टीमेटली एंडेड अप व्हाट आई एम टुडे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा प्रैक्टिकल लाइफ में ही वाज माय गाइड, और ऑफ कोर्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी में पहले नंबर पे आते हैं। माँ का जिक्र है तो मेरी माँ की दुआ मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। बहरहाल माई फादर हैज़ बीन 105 years old। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी अपने बड़े भाई के सामने या अपने वालिद के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो। सरदार यासीन मलिक पाकिस्तान और अक़वाम आलम के दरमियान बेहतर तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
शोबे तालीम की बेहतरी और मईशत की बहाली के साथ साथ यासीन साहब ने अपनी जिंदगी दूसरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और अवाम उन्नास को राहत पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी सरदार यासीन मलिक को इनकी गिरा कद्र खिदमात के एवज एजाजी डॉक्टरेट की सनद तफवीज करती है। रसूल का जन्नत रसूल की और दो में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर तो झोली भर तो झोली भर तो झोली तुम्हारे आसान से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसान से जमाना क्या नहीं पाता। University of Sigmund Freud in Austria, just to name a few of our partner universities. The 2+2 program gives students the access to study at Greenwich University for the first 2 years and then move on to any of our partner universities around the world and carry on with global careers anywhere around the world. And I'm one of the alumni of Greenwich University. Currently, I'm the Group Director of HROC Group, which is a Malaysian-based HR business solutions organization, which started off from Karachi and later on expanded till Malaysia. At this point in time, this is one of the leading company which is helping other organizations to have a proper setup in Pakistan with having all resources available. Wherever I am today, it's probably because of what I was taught back then when I was at Greenwich University, and I'm quite thankful to my faculty and my Vice Chancellor and everybody who was a part of the Greenwich University. They put in all their effort to ensure that they shape out an ordinary person into somebody who can bring in a change into the society. So I have represented myself at a lot of places, on international forums, local forums, and everywhere. I've mentioned very proudly that I am not a foreign graduate from any university of Harvard, but I'm actually a graduate of Greenwich University, and I'm quite thankful to it. So thank you, Greenwich, for shaping me out. Looking forward to having more for it. My name is Akib Sayed. I am currently the Group GM Marketing for Multinet Pakistan Limited. I am a very proud alumnus of Greenwich University. Greenwich was a great experience in overall shaping my personality in the corporate world, and I thank you everyone at Greenwich and the current students and wish them a lot of success. Thank you so much. So welcome.
to session of the high-level political forum. We need to rethink the idea of governance by placing SDG 16 at its center. Institutional and policy innovations at local, national, regional, and international levels can accelerate the implementation of SDG 16 and promote integrated whole of society approaches. This is essential in order to tackle complex challenges such as increasing inequalities, social and economic insecurity, climate change, and rapid technological disruption. As the pandemic continues to rage, public service institutions in conflict-affected countries have been tested in their capacity to mount a coordinated response. Slow, ineffective, or unfairly distributed responses have fueled simmering discontent and distrust in the state and undermined social cohesion and economic resilience. Renewing the social contract, strengthening the rule of law, democratic institutions, and rebuilding trust between people and governments has emerged as key to making progress on the SDGs. The poor and vulnerable are more exposed to its impact and face more difficulties in adjusting to the new normal. We therefore need to ensure that our responses are well targeted and effectively reach the poor and vulnerable. For this, accountable governance is the key. Уважаемая госпожа модератор, мы хотели бы сделать короткую ремарку по теме цели устойчивого развития. Moderator, we'd like to make a statement on SDG 3. The Russian scientists have already developed 4 vaccines for COVID on their relevant technical platforms. The first of them, Sputnik V, has now being used in 60 countries, being used by more than 1.5 billion people. We are ready for future cooperation with other partners in the future to put an end to the COVID-19 pandemic and to ensure efforts are made to achieve SDG 3. Bonjour, permettez-moi de m'exprimer en français. Monsieur le... Myself in French, if I may. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic has had a spectacular impact of the world's efforts to reduce poverty. It also provides us with an opportunity to build a better future. The context of SDGs is key in terms of inclusive and sustainable development. These partnerships should include governments at all levels, civil society, the university world, multilateral organizations, and companies and civil society. We also would call for an approach based on human rights to build more peaceful, fair, and inclusive societies while ensuring that no one is left behind. Thank you, Madam Moderator. We believe that SDG 17 is of particular importance following the pandemic because it is this SDG on international partnerships. And today, in fact, we do hope that it's the SDG after the pandemic. We live in strange and unpredictable times. Times when the threat of a pandemic and restrictive measures imposed by those in charge has made peaceful assembly even harder than before. Times when inclusive and transformative efforts to counter deep-rooted inequalities are essential. In this decade of action, Sweden remains a dedicated ally in the pursuit of peace, at home and throughout the world. The EU has recently also taken steps for the integration of fighting the inequalities in its development cooperation. Promoting and upholding the rule of law is a major priority for the EU internally and externally. The COVID-19 pandemic has set back progress on governance. In its external action, the EU will continue to support progress on democratic governance, rule of law, justice reform, and more effective taxation. Peace, progress, and sustainability are built on the foundation of justice. Nepal's constitution has internalized such ethos and institutionalized the peace process and political transformation. And I'd like to start with one that was made by Ambassador Idris on the need to think of a new social contract to prevent what he called simmering discontents. And this, I think, is a crucial issue that has come out of the pandemic. It not only has caused immediate suffering, but it has exposed inequalities and exclusion that were in existence beforehand, but not so visible. And that has great risk of grievance and of, in the end, the rise of social unrest. So this
social contract. I think it will be important, of course, that it covers all the SDGs. The SDGs are the best medicine, but with particular emphasis on leaving no one behind. Trying to use the leverage and influence of the international community in order to build national fiscal capacities rather than inadvertently undermining them. I mentioned two ways in which I would say those capacities, alas, have been undermined in the past. One, the relentless ideological pursuit of free trade, even when that has meant reducing or eliminating tariffs on luxury goods. And secondly, via deeply entrenched resistance of members of the international community to setting a good example by paying taxes and tariffs themselves when they are in host developing countries. And lastly, even if we mobilize resources and have effective governance, the question, of course, is governance for whom? And there, I think, the principle that's come out very clearly in the COVID crisis and will come out again in the climate crisis, that we need to have equal rights to health and to a safe environment. Principles that, by the way, are deeply embedded in national constitutions around the world, need to be upheld and fought for. It's not enough just to have them in constitutions. They have to be more than words written on paper. Corruption has diverted funds from investment in healthcare. Where corruption is systematic, governments tend to spend less on healthcare, thus increasing inequalities among societies, but also among countries. As the UN Secretary General pointed out, we're facing the same storm, but we are not in the same boat. In the midst of the campaign for a decade of accountability for the SDGs, we at the Contraloría, the Chilean Supreme Audit Institution, are committed to doing our part. At the same time, the crisis has shown us that institutions that are ensuring transparency and accountability have become more important than ever. Supreme audit institutions can carry out audits at all levels of government. They have the essential task of assessing how taxpayers' money is used and whether the measures taken are transparent, sustainable, and inclusive. COVID-19 has exacerbated our systemic vulnerabilities to crises and exposed the failure of macroeconomic governance, as 40 out of 43 countries are experiencing an unprecedented increase in debt to GDP ratio in the Asia Pacific alone. Yet, business as usual continues, as almost 96% of the support provided by multilateral banks and international financial institutions to Asia Pacific countries in 2020 are loans, with meager amounts in grants or debt relief. On the other hand, inequalities have been on the rise. Less than 1% of the region's 4.6 billion population is worth almost 54 times more than the combined GDPs of Asia Pacific's least developed countries, further widened by the pandemic. So rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, financing for development processes should help them address corporate capture, debt distress, illicit financial flows, tax evasions, and neoliberal instruments like investor-state dispute settlement. The very lesson from COVID-19 is to strengthen public healthcare systems, enfeebled by massive privatizations. And yet, almost 76 out of 91 IMF negotiated loans in 2020 pushed for further belt tightening that could result in deep cuts to public healthcare and social protection systems. Such systemic issues have escalated health crises into economic, social, and environmental crises. As a result, decades of progress on poverty, hunger, health and education, gender, water and sanitation, inequalities, climate action, and stronger institutions is being reversed. The transformative new social contract requires urgent action to redress inequalities within and among countries, reconfigure power relations across socio-economic and political spheres, dismantle neoliberal capitalism, democratize governance, and ensure climate justice. COVID-19 has intensified the need for accelerated, united action in light of the devastating toll the pandemic is taking on global health, social and environmental security, and progress on Agenda 2030. Interlinked challenges such as COVID-19, climate change, diminished biodiversity, and continuing crises rooted in economic, judicial, and human rights inequalities inform our call for accelerated action. While some people have access to healthcare, medicines, and vaccines, too many suffer without recourse. While human rights abuses go unpunished and access to justice remains the domain of the few,
view, societies will not know peace and inclusion. These are well-worn truths. But civil society plays a pivotal role in advocating for healthy lives and well-being, reversing widening inequality, and promoting a peaceful, inclusive world. There is broad agreement among governments that we need new global tax rules, but we still don't have an inclusive body where those rules can be negotiated. Instead, decision-making on global tax rules is being led by the G7, the G20, the OECD, which is also known as the Rich Countries Club. This is resulting in rules that do not reflect the interest of the world's poorest countries, but also in rules that do not effectively ensure that the world's wealthiest corporations and individuals pay their share of taxes and do not represent a global consensus. When it comes to international negotiations, we as UN youth representatives experience many hurdles in our advocacy and negotiation efforts. Young people are described as active agents of peace, which means that equal treatment and representation should occur. We want to change the narrative from passive stakeholders to active shareholders. This is why we are also working on the establishment of a framework for the youth in order to participate as equals in negotiations. This notion was agreed upon by all member states in SDG 16, and this so-called generational test will be our main tool to translate that notion into practice. In conclusion, by the words of the former Secretary General Kofi Annan, we are never too young to lead, and you are never too old to learn. This youth-led campaign pleads the UN member states to request an advisory opinion from the International Court of Justice and the linkage between climate change and human rights, as well as the integration of the concept of intergenerational justice. International governance, standards and rules for trade, investments, taxation, and financial flows must underpin national efforts to achieve more equal and inclusive societies. 6 years into the implementation of the 2030 Agenda, the international community is still off track on achieving SDG 16+, and we've unfortunately seen further stagnation and even serious backsliding of progress, even before the COVID-19 crisis. Civic space is shrinking, human rights abuses are on the rise, faith and trust in institutions is waning, conflict and fragility is deepening, and inequalities are widening, leading to blossoming protest movements in many countries where people still feel left behind. We need to continue to seek cooperative approach to shared challenges, not only to be better prepared and to create resilience for future shocks and crises, but also to reinforce trust and strengthen security for all. As we continue to relentlessly encroach on nature and degrade ecosystems, we endanger human health. We need to rethink our relationship with nature and build back better. It has been recognized that business as usual is no longer an option. We need to rethink the way we generate wealth, the way we live, produce, consume, move, and eat. We must shift to a new paradigm of resource use that is socially equitable, economically resilient, and environmentally healthy. Research by UNEP International Resource Panel proves that it is possible. Muchas gracias. Saludo a todos los. And greetings to all the participants in this important political forum. The indigenous peoples have indicated that the Agenda 2030 for Sustainable Development and the SDGs provide us with a historical and unique opportunity to ensure that the more than 370 million indigenous people in at least 90 countries are not left behind. And yet, we continue to be victims of serious violations of human rights. Access to justice for all persons with disability who have experienced gender-based violence during the pandemic by guarantee accessibility and reasonable accommodation in the judicial process. So this meeting is adjourned, and thank you very much again to all of you for your active participation. Dr. S.M. Munir is a dynamic personality with diverse experience in various sectors, including tanneries, textiles, and banking. He is the chairman, Dean Textile Mills Limited, and director, Dean Pharma Products Limited. He is a consummate industrialist and was awarded with the Best Export Performance Trophy by the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry and the Gold Medallion Award from the International Export Association, United Kingdom. Dr. S.M. Munir was awarded Ambassador of Hope by the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, on 15th January 2021. Dr. S.M. Munir was awarded the Lifetime Achievement Award by the President of Pakistan in 2012.
He was also awarded Sitara-e-Isar and Sitara-e-Imtiaz in 2006 and 2007 respectively by the President of Pakistan in recognition of his outstanding public services for the cause of humanity. His contributions and achievements go beyond the economic sphere into the education sector as well. Greenwich University bestowed upon him the honoris causa degree in recognition of his tremendous services for the business sector. मैं तमाम इतने पेरेंट्स हैं जो बच्चे आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूँ कि ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बच्चे आपके लिए एसेट साबित होंगे। ये आगे जाके अच्छे काम करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, जो वालिदैन मशवरा दें उस पर अमल करें, कि बड़ों का तजर्बा हमारे से बहुत ज़्यादा होता है। हम समझते हैं आप बहुत समझदार हो गए, नहीं, टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी बात सुने, उनकी पीस ऑफ एडवाइस को हुक्म मानें। My name is Ishan Shah. I'm a proud alumni of Greenwich University, batch of 95. I was Dean's List here as well, apparently, and yeah, it's been great. The memories are tremendous. It's great to see everybody out here as we celebrate all these years. I'm basically from the banking profession and I'm part of the media and broadcasting, and all of that combined, it's been a fabulous, fantastic experience to be part of this institution. I wish you all well and hope that we meet again. Take care and have a great day. Mr. Ali Jilani. He's a development practitioner focused on democratization of state and society in Pakistan, with over 10 years of advocacy at the national, regional, and global level. He has expertise in capacity building, advocacy, and research for governance reforms concerning access to justice, political, economical equality, human rights, social development, and environmental protection. He currently serves with the Karachi Research Chair, a policy think tank driven for evidence-based advocacy around sustainable development. Mr. Jilani, the floor is yours. Thank you, moderator, and APRSEM for the opportunity. The decade of action and delivery for sustainable development can only be realized if systemic barriers like global inequalities of wealth, power, and resources, international economic trade and monetary frameworks, militarism and conflict, patriarchal authoritarianism, marginalizing governance, shrinking democratic spaces, as well as a guilt-free pass on means of implementation commitments are addressed. The unprecedented COVID-19 crisis has reinforced the need to address such vulnerabilities caused by neoliberal globalization and flawed macroeconomic governance. ODA is falling short of its commitment of 0.7% of GNI, evident of the fact that only 6 countries could meet their ODA targets in 2017, with the overall contribution amounting to $147.2 billion against the required investment of US $5 to $7 trillion to achieve the SDGs. On the flip side, wealth and resources continue to flow from developing countries through illicit financial flows, tax evasions, capital flows, asset stealth, trade mispricing, and profit shifting by multinational corporations, where the data shows that the developing economies lost over 7.8 trillion between 2004 and 2013. With the outflows increasing at 6.5% every year, twice as fast as the global GDP. The terms of discussion around official development assistance need to change from an act of benevolence to that of responsibility for global north, reckoning the historical debt owed to the developing world after centuries of colonial plunder and its continued patterns through neo-imperial neoliberal tactics. People of the Asia-Pacific reject official development assistance used to catalyze private sector engagement, achieve trade, military, and political objectives of donor countries, and its substitution with climate financing, refugee costs,
or debt cancellation as recently proposed by the Development Assistance Committee. ODA needs to be reformed, reviewed for impact, and held accountable for failure to deliver on the commitments rather than being reduced to buzzworded negotiation outcomes going one step forward, two steps back. Debt stress is another key challenge exacerbated by COVID-19, where increased debt financing along with economic downturn will lead to higher government debt to GDP ratio expected to rise to 49% in 2021 among the least developing countries, while the pandemic generally affecting a much larger group of 40 out of 43 countries in the Asia Pacific. Reiterating the Secretary General's appeal reckoning COVID-19 situation, we cannot resort to the usual tools in such unusual times, so we need strong multilateral commitments to address debt distress, having pushed poor countries into generational debt traps, leaving virtually no fiscal space for effective COVID recovery or sustainable development priorities. Trade as a critical MOI need to be democratized through structural reforms prioritizing people and the planet over profits, upholding the essence and multidimensionality of the Agenda 2030, safeguarding state policy space. Localization of SDGs shouldn't mean the absence of accountability mechanism at the global level. To ensure the establishment of global reform entities for SDGs compatibility impact assessment of taxation architecture, trade and investment agreements, and synergizing multilateral cooperation to avoid corporatocratization of the globe. Rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, the processes should help them address macroeconomic pressures embodied in hegemonic trade agreements through conditions of market deregulation, massive privatizations, corporate capture of resources and governance, and neoliberal instruments like ISDS, among others. In terms of technology, the corporate control of data as the raw material for the fourth industrial revolution and concentration of technological innovation in the hands of a few technology giants must not be allowed to compromise privacy, hinder technology transfer, impede the capacity of developing countries to develop their technological capacity, marginalize human workforce, or undermine local knowledge systems. Policy emphasis on digitization and technological advancement must ensure a civil society-led thorough review of the potential adverse effects on the environment, the social, cultural, economic, civic, and political rights of the people. Our decade of action demands the dismantling of neoliberal development framework that destroys the environment, starves people of resources, and strips them of rights, and criminalizes those who stand for justice. The people of the Asia Pacific demand development justice. If the Agenda 2030 is to be endorsed as the global social contract between people and governments of the world, it's high time they walk the talk. Thank you, Chair. Thank you very much, Jelani, for those very cogent comments. I'm sure that the participants have taken note of them and will bring them up in the breakout discussions. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है अर्रहमान वो जो निहायत मेहरबान है अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान तालीम फरमाई उसी ने कुरान की पैदा किया उसी ने इंसान को अल्लमहुल बयान सिखाया उसी ने बोलना उसको अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान सूरज और चांद पाबंद हैं एक हिसाब के वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान और झाड़ियां उसको सजदा कर रहे हैं वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान और आसमान को बुलंद किया उसी ने और कायम कर दिया मीज़ान अदल अल्ला ततगौ फिल मीज़ान ताकि ना तजावुज करो हद से निज़ाम मीज़ान में वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ और मत कम करो तोलते वक्त वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम और ज़मीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं والحب ذو العصف والريحان और अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे خلق الإنسان من صلصال كالفخار पैदा किया उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मट्टी से وخلق الجن من مارج من نار और पैदा किया उसने जिन्नात को शोले से आग के فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे رب المشرقين ورب المغربين रब दोनों मशरिकों और रब दोनों मगरिबों का فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे مرج البحرين يلتقيان रवा किए उसने दो दरिया जो आपस में मिलते हैं بينهما برزخ لا يبغيان दोनों में है एक आड़ नहीं करते तजावुज فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان निकलते हैं इन दोनों में से मोती और मूंगे فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام और उसी के हैं जहाज भी जो ऊंचे खड़े होते हैं समंदर में पहाड़ों की तरह فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام जो कुछ है इस जमीन पर उसको फना होना है और बाकी रहेगी जात तेरे रब की जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان मांगता है उसी से जो कोई है आसमानों में और जमीन में हर रोज वो किसी काम में होता है तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे सनफ़ुरुगु लकुम अय्युहा थक़लान अन करीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ ए दो बोझल जमातों जिन और इंसान فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ए ग्रोहों जिनों और इंसानों को अगर तुम्हें कुदरत हो के निकल जाओ तुम किनारों से आसमान और ज़मीन के तो निकल जाओ नहीं निकल सकते तुम सिवाय जोर के तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. छोड़ दिए जाएंगे तुम पर शोले आग के और धुआं, तो फिर ना कर सकोगे तुम उनका मुकाबला. فبأي آلاء ربكما تكذبان. तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे. فإذا انشقت السماء فكانت وردة